Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel Atha English Zone. Today we are going to study about relative pronoun. What is relative pronoun? Relative pronoun क्या होते हैं? Where we use relative pronoun? What is the function of relative pronouns? For that, don't leave the video and stay with us. We will learn about relative pronoun. So relative pronoun क्या है? A relative pronoun is a pronoun or is a word that joins जो कि मिलाता है two sentences दो जुमलों को often two clauses अक्सर हमारे पास दो क्लासों को मिलाता है and give more information about a noun or pronoun और हमें noun और pronoun के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करते हैं यानी रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन वो वर्ड्स होता है जो कि दो जुमलों या दो क्लासों को आपस में मिलाता है और हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में इसम और इसम ज़मीर के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे पास कौन कौन से हैं रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे पास ये रिलेटिव प्रोनाउंस है रिलेटिव प्रोनाउंस ये relative pronouns है who is used for people and for God for Allah we use who for people इंसानों और खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं who is used for people and Allah for example the boy who was running was my brother the boy who was running was my brother. So here who is used for a boy and boy is a people or a human. So for that we use who. Home is used for people when we talk about in object जब हम किसी इंसान के बारे में बात करते हैं और वो ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ हो तो वहाँ पे हम home का इस्तेमाल करते हैं home the person whom you met was my uncle the person whom you met was my uncle वो बंदा जिसे आप मिले वो मेरा चाचा था so here we are talking about a person and a person is used on object spot so when we talk about an object we use home जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम होम का इस्तेमाल करते हैं हुज हम हुज को कब इस्तेमाल करते हैं हुज को हम जब मलकियत के बारे में जब कोई चीज़ किसी शख्स के साथ मलकियत रखता हो वहाँ पे हम हुज का इस्तेमाल करते हैं The girl whose car was stolen reported to police यहाँ पे मलकियत शो करता है the girls whose car वो लड़के जिसकी कार को चोरी किया गया था पुलिस को इत्ला दी गई है so the girls whose car was stolen reported to police next one है which is used for animal or things the pen which I bought yesterday was stolen by my classmates the pen which is stolen by my classmate that is used for animal things or people that को हम animal things or people के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जैसा कि he said that I will be absent today he said I will be absent today so this was all about
relative pronouns. If you like the video, please like, comment, and share with your friends. Thank you.